क्या हुआ? कहाँ से आए? On Saturday, 22nd July, Varanasi Police marched into the Sarva Seva Sangh campus and evicted the Gandhians living there, taking over the famous institute. Priceless books were found thrown near Gandhiji's statue. Overnight, residents of the 60-year-old campus were rendered homeless. ये गांधीयन इंस्टीट्यूट के कैंपस में बरगद का पेड़ है और एक चबूतरा यहाँ बना है जिसमें कैंपस की महिलाएं बैठती थी, हम सब लोग बैठते थे, अच्छे मौसम में हवाएं लेते थे। आज इस पर पुलिस वाले बैठ करके आराम कर रहे हैं। The campus was built on land bought from the railways in 1960 through the efforts of Vinoba Bhave and with the involvement of then President Rajendra Prasad. It houses Gandhi Vidya Sansthan founded by Jai Prakash Narayan. इसके सामने ये आपने देखा ही होगा, ये जीप है जो जीपी की ज़माने की है जो इस पर बैठते थे। और फिर आप देखेंगे कि ये कुआं है एक, इसका नाम है वाल्टर का कुआं। ये ब्रिटिश टाइम का है और इसका पानी कहते हैं बहुत साफ़ है। The Varanasi District Administration had last month declared that the institute stood on 14 acres of railway land. On June 27th, the railways pasted demolition notices on the institute's buildings, leading to protests by Gandhians from across the country. Allahabad High Court and Supreme Court refused to entertain the institute's pleas and asked it to approach the Varanasi District Court. But before the District Court could hear the case, the police barged in, arrested aged office bearers and protesters, and evicted its residents. The Gandhian Institute, the Sarva Seva Sangh, is now out of bounds. शायद अब ये पेड़ नहीं रहेंगे, ये विरासत नहीं रहेगी। यहाँ कंक्रीट इमारतें खड़ी हो जाएंगी जहाँ बड़े होटल, 5 स्टार होटल होंगे और जहाँ टूरिस्ट आएंगे और पर्यटन होगा। ये विरासत अब यादों में रहेगी। It is being alleged that it will be demolished and a mall will be built over it to promote tourism.